Hello friends, Satish Tiwari here from Mythical Hacking Tuition Center Jaipur, and you guys are watching my YouTube channel /root.in, and this is the second day of Linux project series. Okay guys, so आज दूसरा दिन है Linux project series का, and we are going to configure, actually we are going to set up the complete lab, okay, according to the previous session. प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था हमारा कैसा सिनारियो होगा, कैसे दो सिस्टम होंगे, दो पीसी होगा, एक लैपटॉप होगा, ठीक है, और वहाँ पे कैसे सेटअप करेंगे। सेम सेटअप का आज लैब सेटअप करने वाले हैं। सी दिस इज द माय फर्स्ट मशीन, माय कंप्यूटर मशीन, inside which VMware has been installed. So right now I am going to install a Red Hat Linux machine, RHL machine in graphical mode for our training modules. So I just you can see इस प्रोजेक्ट के लिए जो मुझे चाहिए लाइनेक्स मशीन वो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और मैं कहाँ से इंस्टॉल करूँगा, ये मैं एक नया इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। कहाँ से? VMware में। तो मैं न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आईएसओ फाइल मुझे RHL5 का चाहिए। ये आईएसओ फाइल आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है। आपको ये आईएसओ फाइल चाहिए होगा। कौन सा आईएसओ फाइल चाहिए? यू नीड दिस आईएसओ फाइल RHL 5.4। यू कैन सी RHL5, okay. So you need this operating system for your project. आपको प्रोजेक्ट के लिए apart from VMware and VirtualBox you need this RHL5. Where you can get this RHL5? If you want to download this ISO file, you just visit my blog linuxtiwari.com. You just Google Linux Tiwari and you will get it. Okay, so this one linuxtiwari.com, and you just go to the software page. And here you can see I will show you Linux operating system for cyber security lab. You can see this one. This one you just click here and the ISO file will be downloaded. Okay. So आप इस लिंक पर जाकर इस linuxtiwari.com पे सॉफ्टवेयर पेज में जाकर यहाँ से आप ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। Then you need this software. After once you download this software, you can just use it here. Click on open. So RHL5 ISO file is here. Then click on next. Then you can give your full name. Give anything. Suppose I am giving Satish Tiwari. The username. Let me giving Satish. Password I am giving Red Hat. Confirm password Red Hat. And then click on. Remember this password is for both user and root accounts. Okay, it means this password is Red Hat is password for Satish user as well as root user. Okay, don't forget this one, ये भूलना नहीं है। Next, then click on next. I have Core i7, so I am going to take 2 processor, okay, and given 2 processor. RAM for graphical I have total 16 GB RAM. Out of 16 GB I am going to allot 4 GB to this virtual machine. Although 2 GB is more than enough, okay, but I am giving 4 GB. Now you can see the network type. अभी नेटवर्क टाइप में आपको कौन सा नेटवर्क टाइप सिलेक्ट करना है? आउट ऑफ दिस 4 नेटवर्क टाइप, विच वन यू हैव टू सिलेक्ट? यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन, use bridge networking. Okay, then click on next. Okay, and then click on next, then click on next, create a new virtual disk. Okay, next, 20 GB space. Yes, 20 GB space is okay. You can just select your store virtual disk as a single file. You can also use a split one, but I am using single one. And then click on next, and then click on finish. Okay, now your VMware setting is ready. Installation will start. Let's wait and watch. Now I am going to show you the GUI installation of this Linux machine. यानी इस मशीन के अंदर मैं आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यानी ग्राफिकल में लाइनेक्स इंस्टॉलेशन बताऊंगा, लाइनेक्स का ग्राफिकल इंस्टॉलेशन बताऊंगा। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सिस्टम में जो मेरा लैपटॉप होगा उस पर मैं एक लैब करके दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन का, वो टेक्स्ट मोड का होगा। ये दोनों लाइनेक्स चाहिए, एक पे सर्वर होगा वेब सर्वर, एक पे प्रॉक्सी सर्वर होगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं जैसे टेलनेट का रिमोट लॉगिन का, उस पर भी हम लोग इस पे करेंगे, एक पे सर्वर एक पे प्रॉक्सी या एक पे क्लाइंट, ऐसा। इसलिए हमने 2 अलग अलग कंप्यूटर ले रखा है।
सो आइदर यू आर यूजिंग VMware और वर्चुअल आप इस प्रोजेक्ट को VMware या वर्चुअल किसी भी बना सकते हो। मैंने इसलिए दोनों का कॉम्बो कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। अच्छा गाइस, बीच में मैं बता दूं कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। जो मैं करूंगा टास्क वो क्या करने वाला हूँ, इस लाइनेक्स में ये VMware वाला जो मशीन है इस पे लाइनेक्स इंस्टॉल करूंगा ग्राफिकल में। फिर इसके बाद चलेंगे लैपटॉप पे, वहाँ पे लाइनेक्स इंस्टॉल करेंगे टेक्स्ट मोड में। और फिर दोनों में यम सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। यम्स बोले तो पैकेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ताकि कैसे हम लोग ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले वन बाय वन करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। First of all, I am going to install Red Hat on graphical mode on this machine, and after all, I am going to my laptop, and then I will show you how to install Red Hat Linux in text mode, means CLI mode, command mode. See, this installation begin. Now this installation will take 3 to 4 minutes depending upon your system configuration. ये जो इंस्टॉलेशन का टाइम है ये डिपेंड कितना टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपके पास सिस्टम कैसा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपने इस वर्चुअल मशीन को कितना GB रैम दिया है। तो मेरा जो ये सिस्टम है वो Core i7 है, 16 GB रैम है, और इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो 750 Ti लगा हुआ है। तो ग्राफिक्स कार्ड का कुछ खास मायने नहीं है, बट हाँ रैम इसमें मायने रखता है। तो मैंने रैम वर्चुअल टोटल रैम 16 GB है विंडोज़ को, और इसमें मैंने इसको दे रखा है 4 GB रैम। 16 GB में से 4 GB रैम, यानी आउट ऑफ 16 GB आई हैव allotted 4 GB रैम टू दिस Red Hat Linux machine. Now after this installation I will take you to the another machine, laptop machine, and I will show you the text mode installation on that system. Then I will also explain you the scenario, project scenario, how our project is going on, what are the scenarios, क्या कंडीशन होंगे, कैसे कैसे कितने सारे डिवाइसेस चाहिए होंगे, कौन कौन से ISO चाहिए होंगे, which files you are required, which ISO file required, which software is required. So mainly two softwares required, VirtualBox and VMware. These are two important software. Okay. So VirtualBox you can officially get it from virtualbox.org, and VMware you can manage VMware from other sites. So many sites you can available. Although VMware is not free software, but you can. But if you are not able to manage, and if you don't have VMware, you can comment me. Okay, you can comment on the video section. Just comment below, and I will send you the link. Okay. तो जिस गाइज को ऐसा वो VMware नहीं मिलेगा वो मेरे से मांग लेंगे, मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा। जिनको आईसो फाइल नहीं मिलेगा रेड हैट का, वो मैं आईसो फाइल मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं मिला तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। इफ़ यू डोंट गेट द वर्चुअल बॉक्स आईसो, वर्चुअल बॉक्स इमेज, वर्चुअल बॉक्स का आपको सॉफ्टवेयर ना मिले, यू विल जस्ट आस्क मी, आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, बट इफ़ यू हैव द सॉफ्टवेयर देन इट्स ओके, इट्स बेटर। तो इंस्टॉलेशन विल टेक मोर, आई थिंक 1 more minute। 1 मिनट के अंदर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, and after that we will move to the next machine. Okay, I will just show you the login and then I will move to the next machine. BCA MCA शब्द का प्रोजेक्ट में आप दिखा सकते हो इसको। मैं इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा करूंगा, दिस कुड बी आल्सो यूज्ड एज एमटेक थेसिस। ओके, ये एमटेक वालों को थेसिस में भी इस्तेमाल हो सकता है। सो एमटेक गाइज कैन आल्सो यूज दिस फॉर देयर थेसिस। Okay, the installation is done, the system get rebooted for first time. Just wait and watch.
first time boot हो रहा है, that's why it's taking a little bit time. Next time, from next time it will not take time. Okay, ये पहली बार बूट हो रहा सिस्टम तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा, अगली बार से ये इतना समय नहीं लेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, just 1 minute. Because this is first time and it has to configure something. अच्छा, हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हैं जब तक ये हो गया, नहीं तो मैं सोच रहा था इसको इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं थोड़ा देर लैपटॉप पे जाता उस पर और उस पर कुछ काम करके दिखाता, लेकिन ये बूट होने वाला है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जस्ट वेट. Okay, so system booting, so we will see a login screen, just wait few seconds. So you can see the Linux machine. Okay, and just login, so I am logging with the username root. By default every Linux machine has a root user, and the password for this is I set up is red hat, and you can see I am logging to this Linux machine. Now you can set up all these things, like you can set up the graphical, you, know, you can set this, suppose this is full screen, and if you want to make it graphically more compatible, you can do this using this one. You can go to preferences, and then you can go to, you know, let me check it for screen resolution. You can see screen resolution, and from here you can set it, you can make it what is the perfect, you can choose it yourself. So this is okay, so I make it this one, and now it's working perfectly for me. Now first of all you have to check the IP address, that whether this system has taken the IP address or not. So I have just run if config command, and you can see it has taken the IP address, so there is no issue with the IP address. Okay, now just after installation we have to make certain changes here, certain things we have to set up, like run the setup command. Okay, and then go to the authentication, firewall configuration. Okay, and go to the run tool, firewall configuration में जाकर run tool पे जाकर just press enter, and then here we want to disable the firewall, because we don't want to mess with the firewall using this lab, because later on when we will include security part we will include this firewall, but right now we don't want our project to mess with this firewall. So I will going to disable the firewall, and I am going to disable the AC Linux also. What is AC Linux? AC Linux is a security enhanced Linux. Actually it is a network security project designed and developed by NSA, National Security Agency USA, and later on it is allotted to the open source community to work on it. And just this, that's quit. Okay, so firewall is off, that's all. Now clear the machine. Okay, and you can check your IP address again. Okay, and you can check your firewall using IP tables -L, and you can see there is no firewall rule. That's all, this machine is working perfectly. Now come to the another system. This is our laptop. Okay, so we are coming to the laptop machine, and
here we just going to open the VirtualBox, and inside this VirtualBox I am going to use another Linux machine, and I will name it RHEL projects. Okay, so just click on new and then give it a name, RHEL 5 projects. Okay, now the version of ISO file which I have given you is it is a 32 bit, so just select Red Hat 32 bit. मैंने जो आपको Red Hat का ISO फाइल दिया है लिंक में शेयर किया है अभी, ठीक है, वो कैसा है 32 बिट का। तो यहाँ पर हम लोग वर्जन क्या सिलेक्ट करेंगे 32, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। now 1 GB RAM because I am going to install Linux machine here in text mode। अभी तो हमने ग्राफिकल मोड में इंस्टॉल किया था डेस्कटॉप पे, लेकिन यहाँ लैपटॉप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट मोड में इंस्टॉल करना सीख रहे हैं। तो टेक्स्ट मोड में कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखिए मेरे पास 16 GB रैम है, आई हैव टोटल 16 GB रैम एंड आउट ऑफ 16 GB आई एम गोइंग टू अलाउट 1 GB टू दिस रेड हैट लाइनक्स मशीन, यानी 16 GB में से मैं इसको कितना देने जा रहा हूँ 1 GB। अच्छा मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, हाउ व्हाट इज द मैक्सिमम रैम आई कैन अलाउट, कैन सी अप टू दिस ग्रीन सिग्नल। Okay, it means up to 11 GB I can assign to this Linux machine, but 1 GB is more than enough, so I will just going to allow, I am going just going to allow 2 GB, make it 2 GB. Okay, then click on create, next, next, and it's by default the hard disk space is 8 GB, but 8 GB is not enough, so I will just give it 18 GB and then click on create. Now we have to make some changes in the settings. Okay, remember these changes will be common for every operating system you are set up. Okay, you are going to set up on this VirtualBox. So I am going to settings and I am going to make some changes. The first changes will be in the system, so go to system, remove the tick from floppy drive because nobody using floppy drive, and make the hard disk as a first bootable device. So I have selected hard disk and make it at the top and then optical. Now go to the storage and click on empty section here. You can see empty section here, so just click on empty and then just go to the right side and you can see ID secondary device, and after that you can see a logo of DVD। आप देख सकते हो राइट साइड में जाने के बाद आपको ऑप्टिकल ड्राइव के जस्ट सामने ID सेकेंडरी डिवाइस लिखा हुआ मिल रहा है, और उसके जस्ट बाजू में आपको एक DVD का आइकन मिल रहा है। उस आइकन पर क्लिक करना, जस्ट क्लिक देयर एंड सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन ऐड एंड देन सेलेक्ट द ISO फाइल विच यू हैव डाउनलोडेड। जो ISO फाइल मैंने दिया था, जो आपने डाउनलोड किया था, उसको आपने उसका पाथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और क्लिक ऑन ओपन एंड क्लिक ऑन चूज, दैट्स ऑल। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क, सो गो टू द नेटवर्क। by default network adapter NAT is enabled here, in place of NAT we have to select bridge adapter। Okay, now here you can see I have selected wireless, name is Intel wireless। Why selected Intel wireless, because you can see my system is connected with Wi-Fi। Okay, if your system is connected with LAN you will not select this wireless, you have to select the LAN cable। Okay, the below one, so my system is connected with Wi-Fi device, that's why I have selected this Intel wireless ऐसी। तो ये वर्चुअल बॉक्स का सेटिंग में बता रहा हूँ, जो पहले बताया था वो VMware में था, वो ग्राफिकल कराया मैंने, अब ये वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग बता रहा हूँ। आप देख सकते हो नेटवर्क का अडेप्टर क्या करना है, ब्रिज अडेप्टर करना है। इससे हमारा क्या होगा, एक सिस्टम ये वर्चुअल बॉक्स का मशीन दूसरे वर्चुअल बॉक्स का मशीन या VMware की मशीन से या दूसरे कंप्यूटर से या किसी भी कंप्यूटर से जो कि इस नेटवर्क में कनेक्टेड है उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ क्लिक ऑन ओके एंड दैट्स ऑल, तो सेटिंग इज कंप्लीटेड। नाउ स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, सो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट ग्रीन बटन and the installation will start। Now remember, this is not the text installation, this is not the graphical installation, this is text based installation। Now I have already so many Linux installed, that's why it's giving me some options, so be careful here if you have already installed so many operating system। अगर आपने अपने वर्चुअल बॉक्स में पहले से बहुत सारे Linux इंस्टॉल कर रखे हैं तो इसमें से ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन सा Linux इंस्टॉल करना चाहते हो। I will select this option RHEL 5 for because I am going to install RHEL 5 and then click on start। And now if you want to make it full screen, then go to view and then go to scale mode and then make it maximize। Okay, now here just type Linux space text। Okay, because I am going to install Linux in text mode। if you just press enter, अगर आपने गलती से सिर्फ इंटर प्रेस कर दिया, this Linux will be installed in GUI mode, और Linux install किस में हो जाएगा, ग्राफिकल में। so if you want to install the Linux machine in text mode or CLI mode, just press Linux space text and then press enter, then text mode installation will be started। Okay,
Now it's found CD, it's asking for CD testing. Skip this process because we are not using real CD, so there is no scratch, so we don't need to test it, so skip it. Now you can't use mouse here, okay, just use keyboard. Mainly we are going to use tab key, arrow key, enter key, space key. Okay, now here you can say welcome to, okay, press enter. Now get to using tab key, go to OK and press enter. Using tab key, go to OK and press enter. Now it's asking for installation number. It is something like key, like when you are using Microsoft Windows, you ask for a key. आप विंडो यूज करते हो उसमें भी आपको की मांगता है, लाइनक्स में भी आपको ये की मांग रहा है, बट दिस की नॉट नेसेसरी, ये की जरूरी नहीं है, बिकॉज रेड हैट लाइनक्स इज फ्री फॉर रिसर्च वर्क एंड एजुकेशनल पर्पस, यानी रिसर्च वर्क और एजुकेशन पर्पस के लिए रेड हैट बिल्कुल फ्री है। लेकिन एज इट इज आपने इस पर सर्वर कोई कॉन्फ़िगर करके आप इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ले गए, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आर जस्ट यूजिंग फॉर एजुकेशन पर्पस, सो वी डोंट नीड द की, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस। सो जस्ट गो टू द स्किप की यूजिंग टैब की एंड देन प्रेस स्पेस की हियर, press space key and then go to OK and press enter. Skip is warning, partition table on device SDA was unreadable. Okay, this yes, don't worry, it will not delete your data. Now you can see there are 4 methods of partition. You have to use the fourth one, create custom layout, and then click on OK, then click on new, then here click mount point. Here only 3 changes. First one is mount point slash, and then the second one is size is equal to, we have given 18 GB total space, so out of 18 GB I am going to giving 17 GB to this machine, so 17,000 MB, which is approximately equal to 17 GB, and then go to OK and then press enter. That's all. Now go to OK, enter, yes, OK, 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 OK. Now configure network interface. Yes, we want to configure. Now in our project we are going to use only IP version 4, so just why I am going to enable IP version 4 only. So I'll just press space key and IP version 4 support will be enabled in this Linux machine. Then click on OK, then click on OK again, then click on OK again. Now time zone, so you have to select time zone according to your country. So my time zone is Asia Kolkata, so I will select Asia Kolkata. Okay guys, ये अपना टाइम जोन आप अपने अनुसार सिलेक्ट करना। आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग एशिया कोलकाता। ओके, नाउ इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड। you know that by default there is a user in every Linux machine and that is root user. You can't create that user is by default there। हर Linux machine में root user तो होता ही है by default, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या क्रिएट कर सकते हो उसके लिए पासवर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पासवर्ड, सपोज रेड हैट and then okay, and now installation will begin. Just click on OK. It is checking for the dependency and after that it will format and the installation will begin. Okay, and now this will take approx 2 minutes. Okay, तो जब तक ये installation होता है we are going to another machine and we will do some another work. Okay, ये 2 मिनट लगेगा और ये installation complete हो जाएगा। इसके बाद ये रिमूट मांगेगा, उसके बाद लॉगिन नेम, यूजर नेम, रूट, पासवर्ड, रेड हैट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट इट, इसको होने देते हैं एंड वी मूव टू द अनदर कंप्यूटर। ओके, चलिए तो हम आते हैं दूसरे कंप्यूटर पे एंड नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस मशीन। यू कैन सी दिस इज द 189, दिस इज आवर कंप्यूटर एंड ऑन दिस कंप्यूटर वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर yum server, yum for packet management. So for that yum we need a ISO file which is inside our Windows machine. So you can see inside my Windows machine I am going to open my PC, my computer. Okay, and inside my computer you will find a ISO file inside E drive. Let me check where it is. Okay, inside the F drive. Okay, there is ISO file and here in this ISO file there is a archive file. So I am going to, for that you need to download another software. I am going to, you need this software, everything. Okay, so just Google everything, go to this site and download 64-bit or 32-bit according to your operating system. Download this version and after downloading you will get this one. Downloading and installing, you can see this one, everything logo. आप डाउनलोड करने के बाद आपको एवरीथिंग का ये लोगो दिख जाएगा जो गूगल क्रोम के जस्ट ऊपर है। ठीक है, इंस्टॉल करोगे तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर 2 MB का फ्री सॉफ्टवेयर है। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट, वेरी सिंपल। आफ्टर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग जस्ट क्लिक इट
and then go to tools, then go to options, and then go to HTTP server, and then click on enable HTTP server, and then click on OK, and then allow access because we want our firewall to allow this, so allow access, and that's all. Minimize it. Now what will happen? Now this Windows machine is acting like a वेब सर्वर. अब ये विंडोज मशीन क्या हो गया, हमारा जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो मेरा है, ये जो विंडोज 10 है इस पे कॉन्फ़िगर्ड है. इस विंडोज 10 में क्या कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया. मतलब इस पे हम डाटा ट्रांसफर अभी इससे कर सकते हैं, कोई भी डेटा इस पे है तो ठीक है. अच्छा, तो इस विंडोज मशीन का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं. सो विंडोज, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप द IP config of Windows machine, not the Linux machine. Okay, so what is the IP address of Windows machine? 192.168.29.112. Okay, you can see because I am connected with LAN here, and the IP address here is 192.168.29.112. So 29.112 is the IP address of Windows machine, and we have to type this IP address inside the Linux machine. ये Windows का IP एड्रेस है, और इसी IP एड्रेस को हमें कहाँ टाइप करना है, Linux के ब्राउज़र में. तो चलते हैं Linux के मशीन के ब्राउज़र में, और यहाँ पर जाकर हम लोग एक ब्राउज़र खोल लेते हैं. कोई भी इंटरनेट में जाकर फायरफॉक्स ब्राउज़र हमें मिल गया. इस ब्राउज़र में हम लोग टाइप करते हैं IP एड्रेस 168.29.112 approx, right? Let me check it again. Okay, 112, right? So type this, and when you type this, what will happen? Everything will open. Everything जो हमने विंडोज पे इंस्टॉल किया था वो खुल गया. अब यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं rcl5.space.iso file, and you can see I got this ISO file. Just click here and save the file. So the file getting downloaded from Linux machine, sorry, Windows machine to Linux machine. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइल हमारा डाउनलोड हो रहा है. अभी मैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ उस लैपटॉप पे क्या हो रहा है. ठीक है, लाइनक्स हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होकर रिबूट मांग रहा है. लेट दैट, so you can see this is our Linux machine, and this Linux machine is already installed and it's asking for reboot. So just click on reboot, and when you ask reboot the machine, this machine is rebooting for the first time. ये Linux machine भी install हो गया और first time reboot हो रहा है. After rebooting we will log in through the root user. You know the username is root and the password is Red Hat. Very simple. Okay, so that's all. The installation is complete. Okay guys, now let's move back to the main Windows machine, my desktop. Okay, so you can see here installation download is already going on, so it will take 1 more minute to download. 1 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल. फाइल की साइज क्या है, 2.8 GB. द साइज ऑफ द फाइल इज 2.8 GB, and it is downloaded, it is getting downloaded from my Windows machine to Linux machine. ये Windows से डाटा ट्रांसफर हो रहा कहाँ पे, Linux मशीन में. किस Linux मशीन में, Red Hat Linux मशीन जो हमने अभी इंस्टॉल किया. क्यों हम लोग ये Linux ISO डाउनलोड करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर यम सर्वर यूजिंग दिस ISO फाइल. आपको यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये ISO फाइल चाहिए ही चाहिए. बिना इसके आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाएगा आगे. ठीक है, यू नीड दिस. Okay, so the ISO file has been downloaded. Just close it, you don't need it now. So you can see on the desktop, you can see your ISO file is here. Okay, now what you need to do, you clear the screen here using clear command, and now go to your desktop using cd command. So cd desktop, and now right now I am on desktop. Run ls-ls command to see the files. So you can see the rcl5 ISO file is here, and the size is 2.8 GB. Now we need to extract this folder, extract this ISO file. हमें इस ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक फोल्डर है सर्वर नाम का, हमें वो फोल्डर चाहिए, उसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर हैं. ठीक है, so let's see how to extract this ISO file. So you use mount -o loop and the name of the ISO file and the directory where you want to extract it. So I want to extract it inside the mnt directory, so that run this command.
मैंने क्या किया, पूरा ISO फाइल को MNT फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया. नाउ लेट्स गो टू द MNT डायरेक्टरी cd/MNT and test whether there. So you can see all the files, complete ISO file has been extracted inside this MNT folder. पूरा का पूरा जो ISO फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो सब एक्सट्रैक्ट हो गया. कहाँ पे? इस MNT फोल्डर के अंदर. लेकिन इसमें से हमें कौन सा चाहिए? We only need this one, this server folder. Okay, so out of this all we only need this server folder. So what I am going to do, I am going to copy this server folder. So cp-rb and server folder. Server S is always capital. Okay, remember, and copying it to root. Okay, that's all. So just press enter and the data getting copied. ये data copy हो रहा है. जब तक ये copy हो रहा है, चलो हम लोग चलते हैं लिनक्स मशीन पे और वहाँ जाकर देखते हैं क्या हो रहा है. दूसरे लिनक्स मशीन पे, लैपटॉप पे, जो हमने सिस्टम रिबूट किया था वहाँ पे क्या हो रहा है. तो सिस्टम इस तरह से आ गया है. यहाँ पे मांग रहा रूट, लॉगिन नहीं मांग रहा, रूट पासवर्ड दे दिया रेड हैट, और इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं. जस्ट चेक द IP एड्रेस. इफ config we got the IP address 29.220. That's all. It's working fine. We don't need this, so minimize it. Again we are going to my desktop. Okay, so you can see the desktop here. We have successfully copied the files. Now clear the screen. ls cd command, clear command. You can check df-s so that your disk is full or not. So you can see your disk is not full, so no need to worry. Okay. So we don't need to worry at all because our disk is not full. Only 7.4 GB is full. Still we have 8 GB free space remaining, so no need to worry. Now just I am going to my root directory. Already inside my root directory. Now I will just type ls-ls to see the server folder is there or not. So you can see server folder is there. हमें ये server folder ही चाहिए था और server folder में मिल गया. Now we are going to use this server folder. So just go inside this server folder, cd s capital, and run ls command, and you will see the list of files. These are the RPM files, Red Hat Package Manager, RPM. Okay, these are the softwares. So these softwares are here. You can see the path. The path is /root/server. That's all. Remember this path. We need this path, /root/server. We need this path. Now we are going to configure yum server. For yum server we need to create a file inside this directory. So vim/etc/yum.repos.d. So vim/etc/yum.repos.d. This is the directory, and inside this directory I am going to create a repo file. So a.repo. Remember the extension must be .repo. Now, name could be anything. You can give a.repo, b.repo, c.repo, xyz.repo, satish.repo, mahesh.repo, ram.repo, syam.repo, anything, but the extension must be .repo. Okay, now press enter. Sorry, it's showing vim command not found. So we are just going to use vi command. Okay, and inside this I am going to write something like I am going to write a, the repository name, and then base URL colon, so is equal to file colon //. Now what is where the files are? The files are inside the /root/server folder. So just give the path /root/server. Okay, that's all. File is inside the /root/server, and then you write the one line gpg check is equal to 0, and then save it. Okay, now your yum is ready. Now you are free to install all the any package. So I am going to install MySQL database. So yum install, suppose you want to install MySQL, yum install MySQL -y. That's all. You can see the package getting installed, and for this installation you don't need internet. Okay, so now your machine is ready. You are ready to run this machine as any server. Now you can configure any server on this Linux machine. Now you can see the IP address of this machine is 192.168.29.89. So now I am going to configure a web server on this machine. तो आज मैं आपको सिखाई देता हूँ इस मशीन पे कैसे हम लोग वेब सर्वर कैसे कन्फिगर करते हैं, एंड आई विल होस्ट ए डेमो वेबसाइट. मैं इसके ऊपर एक डेमो वेबसाइट भी होस्ट कर दूंगा. Okay, so I am going to configure a web server on this IP or this machine, and I will going to create a website, a demo web page, or you can say a website on this machine. First of all, for web server configuration you need this package yum
install httpd, okay, then star hyphen y. Now the package for http will be installed, so just wait for the installation का वेट करेंगे। 9 पैकेज है टोटल 9 पैकेज इंस्टॉल हो गए वेब सर्वर के लिए जो चाहिए। आफ्टर दैट you go to the web server directory. Now what is the directory for web server? वेब सर्वर का वो डायरेक्टरी यानी वो पाथ जहाँ पे वेबसाइट के सारे डेटा होस्ट होते हैं, तो दैट इज cd where www html. so this is the path, यही वो पाथ है जहाँ पे वेबसाइट के सारे कंटेंट को हम लोग रखते हैं। सो जस्ट गो टू दैट कंटेंट। आई एम जस्ट want to confirm you using pwd command. Project working directory is where www html. By default nothing is inside this file. You can see when I run ls command, nothing inside this file. I am going to create a html file, and so using nano editor, so nano index.html. so I am going to create a html file and the name of the file is index.html. okay, so I am going to write some code for html. You can write basic line also. Just close this marquee and then close this h2 tag, okay, and then close this body and then close this html tag, okay, html. okay, so now this html file is ready. Now press ctrl x, then press y to save and then press enter, and that's why file is ready. So clear the screen, ls command, you can see index.html is here, cat index.html, you can see the code, you can see the content, file content. okay, now this is the web page. This web page is hosted. Now I am going to run the firewall. Firewall command is service, sorry, run the web server service. So service httpd restart, this is the service. okay, and now chk config httpd on, and then check service httpd status. So service is running, that's okay. And now you have to check the syntax. So httpd hyphen t, so syntax is okay, so there is no problem. Now a website is running on this machine. Which machine? What is the IP address of this machine? The IP address of this machine is 192.168.29.189. so on this machine web server is running. Now I'm going to my Windows machine and typing the IP address of that. So 192.168.29.189, right? Now when I type this, you can see the content is displaying Ethical Hacking Tuition Center Jaipur, and you can see the CCNA Linux Ethical Hacking Cybersecurity. So we can see the web page. So we have configured the web server here. okay, and the next classes we are going to configure web proxy. okay, so now the next session we are going to configure web proxy. So this machine will be the same web server. Now we will configure in laptop there will be web proxy server. okay, so we will configure web proxy in the laptop. Now what will be the situation, you will understand, and after that we will move to web authentication. Let me take you to the laptop, my laptop. So let's go to the laptop, and when you go to my laptop you can see this one. This is my laptop, and inside this machine I will configure web proxy server. Now what will be the scenario? So just understand the scenario, what will be the scenario and what will happen in the next session, what is going on here. okay, so the diagram is something like this. The diagram is something like this. Remember, there is a, this is the computer, this is my computer. okay, so this is my computer and this is my laptop. okay,
So what is the situation? Inside my computer, what is the inside my computer, which operating system, which one I am using, which virtualization machine I am using? VMware. Okay. And inside my laptop I am using VirtualBox. Okay. Here I am using VirtualBox, virtualization software. Okay. So I am using VirtualBox here, and inside this VirtualBox I am using a RCL5 machine, but in text mode. Okay, text mode means in laptop I am using text mode, means no graphical, but in VMware I am using a RCL5 machine. Okay, and this RCL5 machine is graphical. Okay, so I am using RCL5 in GUI, graphical user interface. So this machine is graphical, this one is text based, this one is text based. Okay, so I am using text mode in VirtualBox, graphical mode in VMware. Now I have successfully configured here in this, you can see in this machine what I have done. I have configured a web server here on my Linux machine, on this IP, the web server here, web server already here. Okay, now what I am going to configure on this one VirtualBox, this machine will be configured as a web proxy. So tomorrow class I will show you how to configure web proxy. Now what will happen, the client could be any machine, whether your main Windows machine. Okay, so I can communicate with my Windows machine. Suppose this is my Windows machine. Okay, or you can communicate with any Windows machine or any client or any mobile or anything. Okay, so this is the client. What will happen if client have to visit the web server? So client will not directly visit the web server. अब client directly web server को visit नहीं करेगा. They will go through the proxy. It means what will happen? What will be the scenario? The scenario will be something like that. That the client will now go to web proxy, and then the web proxy will redirect them to the web server. Okay, it means the web server is now controlled by the proxy. You can't directly, no client know the IP address, real IP address of the web server. They don't know the IP address of the web server. They will go to the proxy, and then the proxy will redirect the traffic to the web server. Okay, so before going to the web server you have to pass through the proxy server. Okay, so next class we will see how to perform this web proxy, how to configure the web proxy, and then through web proxy how to go to the web server. So this is the second day class. We have learned how to set up, how to install packages, how to configure yum server, how to configure web server, how to host a website. Okay, how to install the Red Hat in text mode, and how to install Red Hat in graphical mode, and what will be the next class. So the day 3 class will be how to configure a web proxy. Tomorrow it will be a different day. So we are going to complete a next project. So tomorrow a complete project will be a project will be completed. कल की क्लास में क्या हो जाएगी, a project complete हो जाएगी. And what will be the project name? Web proxy. Okay, so just guys, if you like my videos, please like. Okay, like and comment. So I want motivate me. I need motivation to work so hard. Okay, if you don't motivate me, I'm not going to create these videos. Okay, because these are very time taking videos, and I have to use my laptop and my computers both at a time. I have to install the softwares, I have to configure the package management, I have to configure the services, I have to configure these things. Okay, and this takes so much dedication and so much time. So please share it with your friends, your every family members. Subscribe it if you are new to it, subscribe it, like it. Okay guys, and really thank you to stay with us, and I feel very happy to help you if any way I can help you. Thank you guys, thank you for watching.